Hello kids, your learning buddy Aprajita is back with your English class 8 class, and today we are going to do a poem here. So all ready to join with me? So here we start the poem, The Race. So what's this race? Warm up first. Who runs fast, the hare or the tortoise? Discuss. अब कौन ज़्यादा तेज दौड़ता है? हेयर ज़्यादा तेज दौड़ता है या कछुआ? हेयर इज रैबिट एंड टॉर्टोइज इज कछुआ. कौन ज़्यादा तेज दौड़ता है? Let's read the poem and then we'll know about it. You can't race me, said Johnny the hare. Before you have started, I'll be there. From the barley field to the farmer's barn, I'll lick you, Sammy, fair and square. Now, this hare, इसका नाम क्या है? जॉनी. जॉनी द हेयर क्या बोलता है कि इस रेस में तुम जब तक स्टार्ट करोगे तब तक तो मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँगा. जब तक तुम रेस स्टार्ट करोगे. वो टॉर्टोइज को कहता है बिकॉज ही नोज दैट टॉर्टोइज वर्क्स वेरी स्लो एंड from this barley field to the farmer's barn, I'll be the first one to reach there. Sammy the tortoise said, wait and see. Away he crawled to his family, 3. Clarence, Creeper and Marmaduke. They were alike as like could be. Now, वो Sammy the tortoise का नाम क्या है? Sammy. उसने बोला हेयर से, जॉनी से कि वेट, रुको और देखो, वेट एंड वॉच, सी. वो फिर अपनी फैमिली के पास गया. वहाँ 3 और टॉर्टोइस थे जिनका नाम था क्लेरेंस, क्रीपर एंड मार्माड्यूक, और वो सब एक जैसे थे. ये चारों देखने में एक जैसे थे. आई हैव एंटर्ड माई लैड्स फॉर अ स्टीपल चेस. आई कांट लीप ओवर द लैंड अपेस, बट इफ 4 of us run, disguised as one, I guess I can win this jolly old race. Now, this Sammy the tortoise, he goes to his family and he tells all those 3 tortoise that कि मैंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है जॉनी हेयर के साथ, लेकिन हम इतना तेज़ तो हम जॉनी द हेयर से तो जल्दी पहुंच ही नहीं सकते हैं बिकॉज वी आर वेरी स्लो. लेकिन अगर हम चारों मिलके एक ही बन के दौड़ें तो फिर हम ये रेस जीत सकते हैं बिकॉज ये चारों एक जैसे थे देखने में. क्लेरेंस, यू हाइड बाय द ग्रीन डक पॉन्ड. अब सैमी जो टॉर्टोइस है वो क्लेरेंस को क्या बोलता है? क्लेरेंस को बोलता है कि तुम कहाँ छुपो? वो जो ग्रीन डक पॉन्ड है बीच में, वहां पे जाके छुप जाओ. क्रीपर इन पिक्सटी अ माइल बियॉन्ड, और 1 माइल अहेड पिक्सटी जो है वहां पे जाके क्रीपर को बोला कि तुम वहां जाके छुपो. The starting line you barely stood is just the place for you, Marmaduke. और Marmaduke को बोलता है कि starting line जो है वहाँ पे तुम खड़े रहोगे. And me, I'll hide where I'll be needed most. A nose and a half from the winning post. और जो बिल्कुल last end line है, जो winning post है, वहाँ पे मैं छुपा रहूँगा. A nose and a half, थोड़ी दूरी पे ही मैं छुपा रहूँगा. Mom and Johnny lined up at the start. This race, said Johnny, is really a fuss. The wheat I sow from my bag as I go will be ready to cut by the time you pass. अब मामा ड्यूक और जॉनी, क्योंकि जॉनी को तो ये पता है कि वो सैमी है वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन सैमी की जगह वहाँ मामा ड्यूक खड़ा था, मामा ड्यूक द टॉर्टोइस. और वो क्या बोलता है जॉनी मामा ड्यूक से कि ये जो मेरे बैग है मेरे पास, इसमें जो वीट है इसको मैं डालता जाऊंगा, इसको सो करूंगा, और जब तक में तुम पहुंचोगे वहां तब तक तो ये ग्रो भी कर जाएगा. ये जो वीट है ये ग्रो कर जाएगा और काटने के लिए भी तैयार हो जाएगा. बैंग, देयर ऑफ, द हेयर एट अ पाउंड rocketed over the billowy ground, but when he skirted the green duck pond, the tortoise was only a yard behind. अब जैसी रेस स्टार्ट होती है वो दौड़ना शुरू करता है. द हेयर तो बहुत तेज दौड़ता है, तो
वो बहुत तेज़ दौड़ता हुआ जब वो ग्रीन डक पॉन्ड के पास पहुंचता है, वहाँ जाके देखता है कि वो जो टॉर्टोइज है वो तो उससे बस अ यार्ड बिहाइंड है, 1 यार्ड की दूरी पे है। वाई इट वॉज सो, ऐसा क्यों दिखा उसे? क्योंकि वहाँ पहले से ही क्लेरेंस छुपा हुआ था। अब मामा ड्यूक की जगह वहाँ क्लेरेंस रेस को ज्वाइन कर लेता है। And when he came at the old pigsty, they were almost neck to neck. Oh my, poor Johnny the hare, his field half sown. अब जैसे ही वो ओल्ड पिग्स्टी के पास आता है वो जॉनी द हेयर, तो वहाँ देखता है कि वहाँ तो वो सैमी नेक टू नेक है, बिल्कुल उसके साथ साथ चल रहा है। बट इट वॉज नॉट सैमी द टॉर्टोइज, इट वॉज क्रीपर। पहले क्लेरेंस था, फिर वो क्रीपर जो वहाँ छुपा हुआ था वो ज्वाइन कर लेता है रेस, और जॉनी को लगता है कि ये सैमी द टॉर्टोइज ही है। Threw off his bag and continued alone, drooping and drooping, and stopping and puffing and panting, terribly blown. अब वो जो जॉनी है वो अपना बैग फेंक देता है जिसमें कि वो व्हीट रखे थे, वो सो करता हुआ जा रहा था, उसको फेंक देता है और तेज़ दौड़ना शुरू करता है। हाँफते हुए और ज़्यादा तेज़ वो दौड़ता है। 10 yards from the tip he grew a bit bolder. अब जैसे ही 10 yards रह जाते हैं जहाँ फिनिश लाइन था, वो जॉनी जो है, जॉनी द हेयर, वो और बोल्ड हो जाता है। And casting a careless eye over his shoulder, Sam, are you there? said Johnny the hare. और वहाँ जाके वो और बोल्ड बन जाता है और फिर प्राउडली पूछता है कि सैमी से पूछता है, सैमी द टॉर्टोइज, क्या तुम हो यहाँ रेस में? I have won, said the tortoise in front. I'm already here. और to his surprise, जॉनी इतना सरप्राइज होता है क्योंकि वो सैमी द टॉर्टोइज उसके सामने फिनिश लाइन पे खड़ा हुआ था। And you know why? Because Sammy the tortoise was hiding there. वहाँ से वो रेस को वो ज्वाइन कर लेता है। So all these 4 tortoise एक जैसे थे देखने में, और ये इस स्टीपल चेज को ऐसे जीतते। So farmer and friends were holding the tape, and there was Sammy, all bowing and scrape, his head held high. What a suck in the eye for Johnny, who stands with his mouth agape. अब फार्मर और जो फार्मर्स थे और फ्रेंड्स थे वो सब वो टेप लेके खड़े रहते ना फिनिश लाइन पे, एंड वहाँ सैमी द टॉर्टोइज अपने सर ऊंचा करके जीत के खड़ा हुआ और जॉनी का मुंह खुला का खुला रह गया। Well done, said the farmer, and now methinks 'tis proper to offer you eats and drinks. Will you join me both? No, with an oath, said Johnny the hare, and home he slinks. Now वो फार्मर जो कहता है कि अब सब कुछ खाएंगे पिएंगे और क्या तुम दोनों मुझे ज्वाइन करोगे? तो जॉनी द हेयर ही रिफ्यूजेस और वो अपने घर चला जाता है वापस। बट लेटर बैक टू द फार्म ही हॉबल्ड। थोड़ी देर बाद वो फिर फार्म में वापस आता है। हिज लिम्स वर स्टिल लिम्प एंड हिज ब्रेन वॉज फडल्ड। As he peered through the window, he babbled and bubbled. 4 Sammies I see a-sipping their tea. Strikes me I galloped so fast, I'm seeing twice double. Now, जब वो वापस आता है फार्म में, जॉनी द हेयर, तो वो उसका अभी भी वो लंगड़ा रहा था क्योंकि इतना तेज़ दौड़ा था वो, और जैसे वो एक विंडो के अंदर देखता है वहाँ उसे 4 सैमीज दिखते हैं। क्यों 4 सैमीज दिखते हैं? क्योंकि वो चारों एक ही फैमिली से थे और एक जैसे थे देखने में। तो वो क्या सोचता है? ही स्क्रैचेस हिज हेड और वो सोचता है जॉनी द हेयर कि मैं इतना तेज़ दौड़ा, मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे ट्वाइस डबल दिख रहे हैं, 4 सैमी दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो wasn't it a very funny poem? And how the tortoise used their brains, his brain, Sammy the tortoise, and he won the race. So let's do the comprehension here, children. Now darken the correct option in OMR sheet. You hide by the green dash pond.
Green which pond? Duck pond. Okay, it was a green duck pond. They were almost neck and dash. Knee, neck, bell, feet. Neck and neck. What a sock in the dash. Bin, eye, bag, box. What a sock in the eye. I am seeing dash double. Johnny को क्या दिखाई दे रहे थे? Daily, twice, thrice, once. I am seeing twice double. Now fill in the blanks. Family tortoise alike as like Marmaduke. Sammy the tortoise. Sammy कौन था? Tortoise. Okay. Away he crawled to his family. वो कहाँ गया? अपनी family के पास गया पहले. And dash and Marmaduke. They were dash could be. They were alike as like. They were alike as like. Fine, children? Now, let's move further. Say if the given statements are true, T, or false, F. The meaning of the word galloped is walked. No, false. Galloped means to run more faster. The name of hare is Jackie. False. The name of the hare is Johnny. Johnny the hare was very proud. Yes, he was very proud of himself. Sammy the tortoise won the race. Yes, true. Now answer the following questions. What did Johnny carry with him and why? Johnny carried a bag of wheat with him because he wanted to show, he told the Sammy the tortoise that I would sow my farm, this wheat, and till you reach there, they'll get ready for cutting. What did Johnny see when he reached the green duck pond? When Johnny reached the green duck pond, he saw Sammy the tortoise a yard behind him. What did Johnny see when he reached the old pigsty? When Johnny reached the old pigsty, he saw Sammy the tortoise neck on neck with him. Why did Johnny throw off his bag? Johnny threw off his bag because he wanted to run more faster and reach the finish line first. What did Johnny see when he was 10 yards from the winning post? When Johnny was 10 yards from the winning post, he asked Sammy that, Sam, are you there? And Sammy replied that I am at the finish post, and he saw Sammy in front of him. So children, let's move further. We do some grammar here. Use the opposites of the following in sentences of your own. कुछ words दिए गए हैं यहाँ, इनके जो opposites हैं उनका sentence form करना है हमें. Like half का opposite क्या होता है? Full. अब full से एक sentence बनाएंगे. The bag was full of beans. Start, stop. Start का opposite stop. So make a sentence with stop. Win, lose. So just make the sentences with the opposite of these words. Where will you put a bit in each of these sentences? अब हमें यहाँ ये जो bit का use करना है इन sentences में, कहाँ लगाएंगे हम इसे? These trousers are tight. These trousers are a bit tight. Okay, these trousers are, we'll put a bit here. A bit tight. Tell me about your family. Tell me, we'll put a bit here. Tell me a bit about your family. This book costs too much. This book costs a bit too much. I'm tired. I'll have a cup of tea. I'm tired. I'll have a cup of tea. I'm a bit tired. We'll write down a bit here. I'm a bit tired. I'll have a cup of tea. I waited and then the bus came. I waited a bit and then the bus came. The telephone call to London was expensive. The telephone call to London was a bit expensive. Now punctuate the following using capital letters where necessary.
अब इन सेंटेंसेस में हमें जहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है, वी हैव टू पुट कैपिटल लेटर्स एंड राइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली. सैम, आर यू देयर, सेड जॉनी. अब देखिए नेम, ये जो स्टार्टिंग है, व्हेन वी स्टार्ट द सेंटेंस, ये कैपिटल से स्टार्ट होता है. आर यू देयर, सेड जॉनी. जॉनी इज ऑल्सो अ नेम, तो ये भी कैपिटल से होगा, JOHNNY. दिस रेस, सेड जॉनी, इज रियली अ फस. एंड लास्ट में फुल स्टॉप भी लगेगा. This again starts, sentence starts with capital. Johnny again capital, JOHNNY, is really a fuss, full stop. I'm seeing, I'm apostrophe. Seeing twice double, said again Johnny, J capital, fine, to himself, full stop. Well done Sammy, well, W capital. Sammy again name, S capital. Fine. Said the farmer, you have, see contraction. So you have को कैसे लिखेंगे? YOU''VE. Won the race, full stop. Will you both join me at tea, said the farmer to Sammy and Johnny. Will, again start the sentence with capital. You both join me at the tea, said the farmer to Sammy, S capital. Fine. Sammy and Johnny, J capital, JOHNNY. Now speaking skills, children. Speak the fable in your own words. ये जो fable हमने अभी poem के form में पढ़ा है, इसको अपने words में you have to tell. Writing skills. You must have heard of another fable about a proud hare and a tortoise. आपने hare और tortoise की story, एक और story सुनी है. In that fable also the tortoise wins the race, but there he wins in a fair way. Write that story in your own words. But वो जो हमने story सुनी है hare और tortoise की, उसमें जो tortoise है वो कोई trick play नहीं करता है. इस poem में तो trick play किया है इस fable में, but उस fable में trick नहीं play करता है, वो fairly ही जीतता है उसको. Then write a story of that. Okay? Values. This poem is a fable. ये एक fable है, ये poem है, इसको fable कहते हैं. A fable is a short story that is intended to teach a moral lesson. Fable क्या होता है? एक short story होती है in a form of poem and उसमें एक moral lesson भी होता है. Fables are not based on facts. Often they have animals as characters. Fable में animals जो characters होते हैं वो animals होते हैं. Do you find any moral in this fable? Justify your answer. क्या moral है इस fable में children? That yes, it was a good idea, like he won the race, the tortoise, Sammy the tortoise won the race, but he played trick with the hare, and that is not fair. Fine, in any game, in any sport or in your life, the tricks should not be played with others. दूसरों के साथ कोई trick नहीं खेलना. अगर जीतना है तो fairly जीतना है, fair game खेलना है. Okay? So children, here we end up with our chapter, with our poem, and I hope you enjoyed the poem and कुछ सीखने को भी मिला, अच्छा सीखने को मिला कि कभी ट्रिक्स नहीं खेलना है किसी के साथ. So stay tuned for the new video. We'll meet again with a new chapter. Till then, keep learning, be happy. Bye.